Good morning everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है ऋषभ and let's begin today's class for revision for PIB February part 2 11 to February 21. ठीक है. Good morning Nivedita. Good morning Aniket. Good morning rest of the people. Good morning Abhi. Okay. Let's start the second part. 11 to 21st. Okay, now second advanced estimate of production. Not very important for RBI but can be important for NABARD. And I am not going to speculate on when it is going to happen. Okay. Now, second advanced estimate just says that we are going to have a record production of major crops. Since this is year of millets, Sri Ann has said in the union budget. So the millets become more important. Just try to remember the production of millets this year. Okay. So some numbers. Record production of food grains. Food grains means total food grains. कितना 3,235 lakh tons of food grains. Okay. And nutri cereals, coarse cereals, Sri Ann, millets, सबका एक ही टर्म है 527 lakh tons. Now this will also be record. Wheat and rice not very important for RBI but still देख लो एक बार 1300 lakh ton and 1100 lakh ton of wheat production in India. The nutri cereal will be important because the year of millets है 527 lakh tons. ये advanced estimate, second advanced estimate है. Third आएगा फिर एक fourth भी आएगा because agriculture year is July to June not April to March. जुलाई टू जून तक में एक बार और फोर्थ तक आएगा अभी वो एस्टिमेट. तो ये सेकंड है. अभी एक और आएगा मे बी एग्जाम से पहले आ जाए. Okay, now let's go ahead. Don't remember, try to mug up all the numbers. Will not be helpful for the exam. इतना रिटर्न नहीं मिलेगा याद करने का. Now, as per budget, India is the fastest growing economy. India is the fastest growing economy of the world at 6.1%. Okay. For 2024 financial year as per IMF projection. IMF have also projected that not among major economy, agar all the economies are taken together, then Saudi Arabia is the highest growing GDP for this financial year. मतलब 2023 financial year के लिए is Saudi Arabia. For the next financial year 24 के लिए it is India at 6.1%. Okay. Now, somebody asked this question. 1.95 बोल रहा था. It is 1.97 lakh per capita income in the budget. But actually, I don't know or no one knows because it is not mentioned from where finance minister arrived at this number. क्योंकि इसी के लगभग 15 या 20 दिन के बाद NSO numbers आए थे. NSO said that India's per capita GDP is 1.72 lakh nominal. ये NSO के numbers थे. So how government arrived at 1.97? I don't know. No one knows. Maybe it is World Bank criteria. World Bank criteria, they converted dollars to Indian rupees for per capita, or maybe a Bloomberg report and they divided the GDP numbers from the total population to arrive at per capita. तो अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज पर कैपिटा एज पर बजट 1.97 2 लाख रुपए लगभग. As per NSO, the government data क्या कहता है? It is 1.72 lakh for nominal and around 98,000 rupees for real. Okay. It depends what exam is asking. If it asks कि बजट में कितना लिखा था तो 1.97, but ऐसा नहीं लिखेगा because NSO are real government data. Government का data है backed by calculations of the government, use the methodology of the government. So NSO का data ज़्यादा important रहेगा. 1.72 lakh you will have to write if nominal GDP according nominal per capita according NSO is asked.
बट अगर बजट लिख देता है, उसमें स्पेसिफिकली लिख देता है कि बजट के हिसाब से बताओ, तो द FM has said 1.97 lakh. How has FM arrived at this number is not known, but I think it is the World Bank number. They have just converted it to rupees. ठीक है, क्योंकि सेम आता है उससे. Now, Union budget has also said about 10 lakh crore capital expenditure. That is 3.3% increase of the GDP. 10 lakh crore है, 1.3 lakh crore for states and rest for the center. Okay. Now, नमामि गंगे अगेन और जल शक्ति स्कीम. ठीक है, इसका फेज 2 शुरू हो गया है, so it becomes a bit more important. Phase 1 was of 20,000 crore. Phase 2 has an outlay of 22,500 crore. 2026 तक चलेगा ये, from 2022 to 2026, to clean what? Not just river Ganga, but also the tributaries of river Ganga. Tributaries are those rivers that fall into the major river. ये होती है tributary. Like Yamuna is also a tributary of Ganga. Okay. Or a Gomti. Or any other river. Okay. That falls into विचित्र सेन. जय श्री राम. हाँ, आज तो अष्टमी है, कल है रामनवमी आई थिंक. ओके. नाउ नमामि गंगे मिशन 2 launched in June 2014 up to March 2021. ये फर्स्ट फेज था, खत्म हो गया 2021 में. 20,000 crore was the budget outlay. Now Namami Gange phase 2 has started for 22,500 crore, including अच्छा विचित्र से ओके 22,500 crore ओके हैज बीन आउटले. इसमें से आधा पैसा होगा पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए, अराउंड 11,000 करोड़ फॉर ओल्ड प्रोजेक्ट एंड 11,000 करोड़ फॉर न्यू प्रोजेक्ट. ओके, तो बजट आउटले याद रखना फॉर 4 ईयर इज 22,500 करोड़. ओके. नाउ की फीचर्स आर दिस. रिमेंबर दिस, अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ऐसे, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पैनलमेंट ऑफ एजेंसीज टू सपोर्ट डीपीआर. ठीक है, डीपीआर मीन्स डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डीपीआर, मैपिंग एंड मंथली मॉनिटरिंग ऑफ ड्रेन्स, कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्लज एंड इट्स मोनेटाइजेशन. ओके, आई एम रनिंग स्लो. ओके. मंथली रिपोर्ट्स and review of activities for improved monitoring system. Yeah, I know it is bulky. The schemes are bulky. Pay more attention to the schemes that are mentioned in news. जो न्यूज में है, पिछले 6 महीने न्यूज में रही है, पीआईबी में भी न्यूज में रही है, या जहां पे गवर्नमेंट का थोड़ा ज्यादा पिछले 2 साल या अगले 1 साल में ज्यादा पुश करेगी गवर्नमेंट जो स्कीम्स, दैट आर मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, और स्कीम्स रिलेटेड टू द बैकवर्ड सेक्शंस, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है. एंड द रेस्ट ऑफ स्कीम्स आर लाइक स्कीम्स, क्योंकि हर साल 10 स्कीम आती है गवर्नमेंट. इसी साल बजट में 6 नई स्कीम्स आ गई हैं, 3 तो सिर्फ एनवायरनमेंट को लेके. सो या यू हैव टू पुट मोर फोकस ऑन न्यू स्कीम्स, बट यू कैन नॉट लूज योर सेंस ऑफ ओल्डर स्कीम्स ऑल्सो. ओके, तो नई स्कीम्स पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ आरबीआई के लिए नहीं, फॉर एनी एग्जाम. ओके, बट ओल्डर स्कीम्स को एक एक नजर तो देखना ही पड़ेगा, कि कम से कम ये पता होना चाहिए कि कहाँ की किस मिनिस्ट्री की है, एंड व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड लॉन्चिंग द स्कीम. दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर फॉर ओल्डर स्कीम्स. ओल्ड स्कीम्स के लिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट फॉर न्यू स्कीम्स इफ यू गो इनटू डिटेल इट विल बी मच बेटर. ओके. नाउ institutional strengthening of SPMG, stringent monitoring of DPR, strengthening of District Ganga Council for capacity building, fixed day mandated monthly meeting, and more participation in Namami Gange programs like Earth Ganga. Okay, so एक जनरल आइडिया है कि ये सब काम होना है अंदर नमामि गंगे फेज 2. ओके, so Namami Gange program is an integrated
Okay, Namami Gange program is an integrated mission for conservation of Ganga and its tributary. Basic है ये. Comprehensive Ganga River Basin Management Plan was developed by consortium of 7 IITs. If you can remember it, not very important. Now these 5 things are important. Integrated river basin approach. ठीक है, निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा, अर्थ गंगा. And most important is सबसे नया इसमें अर्थ गंगा है because the government is pushing for more economic reforms. So how to use Ganga as a source of income for the people living around Ganga. So this is Earth Ganga model. Okay. So pollution abatement Nirmal Ganga, improving ecology and environment Aviral Ganga, strengthening people river connect. It is Jan Ganga, and scientific research mapping study Gyan Ganga. Okay, Anshu, wait. Hello. I think voice is here. Let me hear my own voice. Voice is there? My voice is audible, no? Okay. Okay, Abhi. Okay. Okay, Aniket. तो ये याद रख लेना 5: निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा एंड अर्थ गंगा. मोस्ट प्रोबेबली अर्थ गंगा विल बी इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके अराउंड एक देयर वाज अ प्रोग्राम इन वाराणसी ऑल्सो वेयर 10 cities were formed around the Ganga river islands. ठीक है, अर्थ गंगा boosting economy and livelihood. So अर्थ गंगा model which envisioned the prime minister aim in 2019 it was launched to strengthen the people river connect and help river Ganga to boost economy and boost income of the people living around the Ganga basin. So the model strives to improve the quality of life of people in Ganga basin through sustainable economic development and strengthening people and river connect. Okay, so paradigm shift simple है. Paradigm shift में क्या किया जाता है कि what new things the Namami Gange part 2 is going to do. Okay, so integrated basin approach from river-wise approach in GAP1, GAP2 not important. Long term, यानी 15-year cost, project cost and operation and maintenance activities are included. मतलब अगर आज हमने कुछ बनाया, for example, for river Ganga, we made a water treatment plant. So for 15 years it will be covered under the operation and monitoring project cost. Project cost will include the operation and monitoring cost for at least 15 years. Now, hybrid annuity mode, afforestation, biodiversity, ecological and wetland conservation around river basin, paradigm shift towards river-centric city planning, okay, and data-driven planning and community involvement, as we have seen from the 5 components of river Ganga, this model, okay, integrated river basin approach model. इसी यही है निर्मल गंगा से लेके अर्थ गंगा तक. व्हाट इज द पैराडाइम शिफ्ट इन प्लानिंग फॉर क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू कैन गो थ्रू इट. ये याद रखना जरूरी है. इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मॉडल, इट विल हेल्प यू at least in some of the MCQ, one of the MCQ. Now, cabinet approves strengthening of cooperative movement. We have read about it. फिर से पढ़ लेते हैं. So primary agriculture credit societies are going to be made in those villages where there are no agriculture societies, cooperative societies present. ठीक है, कोस्टल एरियाज में फिशरीज कोस्टल सोसाइटीज बनेंगी एंड द एनिमल हस्बेंड्री कोस्टल सोसाइटी एंड एक एग्रीकल्चर कोस्टल सोसाइटी जो है तो वो तो रहेगी. सो अराउंड 63,000 PACs आर देयर इन इंडिया. ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डेयरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और फिशरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. देयर आर 63,000. It will be made to go to 2 lakh PACs in the next 5 years. 63,000 है जिनका कंप्यूटराइजेशन हो रहा है. वी हैव रेड अबाउट इट. इसको 2 लाख करना है मल्टीपर्पज PACs. ओके, यस ब्रूस वेन राइट. वेट, ओके. Now it will be implemented with the support of NABARD, NDDB and NFDB. Dairy Development, Fishery Development Board and NABARD
will implement it and give some funds, obviously. Okay, so Department of Animal Husbandry and Dairying में two schemes will be put together, that are National Program for Dairy Development and Dairy Processing and Infrastructure Development Fund. Same flagship scheme of fisheries, that is Pradhan Mantri Matsya Sampada and Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund will be for development of fisheries. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के ये दो स्कीम्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विल बी क्लब टुगेदर फॉर द implementation and funding of PSCs around the villages where there are no PSCs. Okay. Now committee, a high-level interministerial committee under the chairmanship of Home and Cooperation Minister has been constituted and empowered to take necessary steps. Okay, Cooperation Minister and Home Minister. Who is the Home Minister? And I will give you a hint, आप chronology समझिए. Okay. Now E-Sanjeevani landmark, बस ये याद रखना है एक नंबर के लिए, that more than 10 crore patients have been provided with telemedicine consultation using E-Sanjeevani. Yeah, I mean correct अभी. आप chronology समझ गए. ठीक है, तो E-Sanjeevani landmark milestone for providing telemedicine for 10 crore people. Telemedicine is basically correct. So, okay, this is government's, let's say, practo. तो ये ई संजीवनी पोर्टल है, 10 करोड़ लोग हो गए. How it helps? The same as Telemanas. There are two structure here. One structure is you go to a health and wellness center and you will be provided with support. And if not, then from that health and wellness center, a specialized doctor will be connected to you. इसको बोलेंगे hub and spoke model. And the second is you can directly connect to your nearest health and wellness center while sitting at your home. ठीक है, आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से वाया ई संजीवनी पोर्टल. So these are the two structures. So let's move ahead. 10 करोड़ बेनिफिशियरी है एंड 10 लीडिंग स्टेट्स में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश फॉर ई संजीवनी, फॉर द यूजेज ऑफ ई संजीवनी. Okay, e-Sanjeevani was rolled out as an important component of Ayushman Bharat Health and Wellness Center program in 2019. Okay, so it is important for implementing teleconsultation of 1.5 lakh health and wellness center. Important है ये number important है 1.5 lakh, ये बार बार आता है 1.5 lakh health and wellness center is there. Okay, now the two structure of e-Sanjeevani, one is obviously Ayushman Bharat Health and Wellness Center. Provider to provider means provider is what? Your nearest health and wellness center. अपनी nearest किसी polyclinic और clinic गए, वहां से you will be provided expert consultation from your health and wellness center to a specialized doctor. तो इसको बोलते हैं provider to provider telemedicine support, hub and spoke model. And second is e-Sanjeevani OPD, patient to provider telemedicine means the citizens can directly with their smartphones or tablets or computers directly connect to the hospitals or doctors. ठीक है, OPD सर्विस ई संजीवनी, ये भी दो स्टेज में जस्ट लाइक टेलीमानस. ओके, नाउ रिकमेंडेशन ऑफ 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग. नॉट इम्पोर्टेंट कि शार्पनर पे कितना जीएसटी लगा है अब, क्योंकि अब तो होने वाला नहीं है, एग्जाम आस पास अप्रैल में, मई में होने वाला है. सो 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज बेसिकली, याद करने की चीज में ये कि द फुल अराउंड 17,000 crore up to June 2022 compensation has been released to the state. ठीक है, the government of India has decided to clear the entire pending dues of GST compensation till June 2022, क्योंकि जून 2022 के बाद कोई compensation नहीं मिलेगा states को. No compensation will be given to the states post June 2022. Okay. Now this is important. Jadui Pitara. Okay. Under National Education Policy, Union Minister Shri Dharmendra Pradhan launched Learning Teaching Material for Foundational Stage. अभी जादुई पिटारा is actually like a toolbox for learning teaching material for foundational stage. ठीक है, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबको पता ही है, 5+3+3+4. टू मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इससे पहले भी एजुकेशन पॉलिसी से. This education policy is being relearned. A new committee will be formed for implementation of education policy. अभी भी बहुत implement नहीं हुई है ये policy.
though it's a very important policy, a very flagship policy, like a pet project for the PM himself, but still it can't be executed till now. ओके, इसकी feasibility के लिए एक नई कमेटी बन रही है feasibility study के लिए. Now the Department of School Education and Literacy has constituted a national steering committee headed by K. Kasturi Ranjan to develop a national curriculum framework for each stage. Okay. Launched national curriculum framework for foundational stage by Ministry of Education in 2022 was launched. Learning teaching material and learning teaching material for foundational stage will be called Jadui Pitara. Okay. फॉर एज 3 to 8 ईयर, क्योंकि पहले 5 साल के लिए है ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए. 5+3+3+4 है, तो पहले 5 साल के लिए जादुई पिटारा इज अ लर्निंग टीचिंग मटेरियल टेलर्ड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज 3 to 8. Okay, just remember this, everything else is fine. Now the features: simple, learn through play, ages 3 to 8, research fields as diverse as neurosciences to education. Too aspirational, but इतना नहीं रहेगा, just play material will be provided. Okay, now applies to class 1 and 2 also, 6 to 8 years of age, and a huge shift children will learn to play and have fun, and foundational learning will be addressed. Foundation learning and numeracy will be addressed. Okay, learning and development in 5 domains, that is physical development, emotional and ethical development, cognitive development, language literacy development, and cultural development. Okay, these 5 issues will be addressed through learning through play. Okay, so puzzles, toys, toolboxes will be given and provided to the schools for foundational learning and numeracy ability increase. तो बस याद क्या रखना है इसमें कि जादुई पिटारा हमारा फाउंडेशनल लर्निंग फर्स्ट 5 ईयर ऑफ एनईपी से रिलेटेड है. ओके, एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. जादुई पिटारा नॉट अ मैजिक शो बट अ टूल बॉक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशनल लेवल लिटरेसी. ओके, now global biofuel alliance. So 3 countries, that is Brazil, India and US. Brazil, India and US are the 3 countries for India Energy Week. ठीक है, ब्राजील, इंडिया और यूएस रहेगी 3 countries that are spearheading it, but these countries want a consensus of all the G20 countries for the global biofuel alliance. क्योंकि बायोफ्यूल यूज करेंगे तो हमारा डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल विल रिड्यूस. जैसे इंडिया इज गोइंग फॉर अ 20% ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग. ठीक है, तो ये भी एक तरह का बायोफ्यूल हो जाएगा. सो इफ यू यूज बायोफ्यूल मोर एंड फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजीज विल बी डेवलप्ड मोर, इंजन को ज्यादा रिफाइन किया जाएगा फॉर फ्लेक्स फ्यूल, देन आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल विल बी लेस. Okay. So the priorities of G20 presidency was announced by Sri Hardeep Singh Puri. Brazil, India and United States is leading. Biofuel producers and consumers will work together during the next few months towards development of global biofuel alliance. Okay, not important. G20 ना, अब ये सब पहला पहला याद रख लेना. G20 empowerment of women. Okay, empowerment of women. So Agra is going to host the G20 Empower Inception meeting. Inception means inaugural meeting. Agra is going to host. Now can be important ये meeting. For a 1 marker in phase 1. That's all. इतना ही importance होगा इसमें. 3 focus areas: women entrepreneurship, partnership for promoting women leadership, and education is the key to women's empowerment and equal force. तो याद क्या करना है? G20 Empowerment of Women meeting in Agra. फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन लखनऊ. उसके बाद होगा पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर. व्हाई वी हैव टू रिमेंबर दिस? बिकॉज दैट डिजिटल पेमेंट कॉन्क्लेव हैज हैपेंड एंड स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ. एक दिन पहले शुरू हुआ था, फ्रॉम 9th of February. इन द प्रीवियस वी हैव रेड अबाउट इट, प्रीवियस PIB रिविजन. ठीक है, तो ये याद रखना. फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इन फ्रॉम लखनऊ एंड एंड इन बैंगलोर. ओके, नाउ धारा ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स. ओके, अगेन रिवर आ गया, पानी आ गया, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रिसाइडेड ओवर द ओपनिंग सेशन ऑफ धारा 2023, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिनिस्ट्री फॉर क्लीन गंगा and National Institute of Urban Affairs. TARA is annual meeting of members of River Cities Alliance and provides a platform for senior officials including commissioners. ठीक है, over 100 member cities of India. Around 100 है, 90 से 100 के बीच में है अभी.
ओके, सो ये मेंबर सिटीज जो है इंडिया की, जो रिवर्स के अराउंड बेस्ड हैं, वो मेंबर सिटीज अराउंड गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड इवन अदर रिवर्स आल्सो, उसके कमिश्नर्स, engineers and planners are going to meet under the dhara. Okay, Union Minister of Jal Shakti has presided over it. Now Adi Mahotsav, Adi means tribal, ठीक है, तो Adi Mahotsav will be related to tribal festivals. Okay, so Prime Minister Narendra Modi has inaugurated National Adi Mahotsav on 16 February in New Delhi. Now the theme is Spirit of Tribal Craft, Culture, Cuisine and Commerce, and 1000 tribal artisans from 28 states will take part. अब ये एनुअल फेस्टिवल है, अब ट्राइबल से रिलेटेड है, तो ट्राइफेड कराता है ये. ओके, ट्राइफेड डज इट. इट इज अ जॉइंट इंपरेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड. द फेस्टिवल शोकेसेस ट्रेडिशनल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द ट्राइबल हेरिटेज एंड कम्युनिटी ऑफ द कंट्री. जस्ट रिमेंबर, आदि महोत्सव दिल्ली कब से हो रहा है? 2017 से हो रहा है. दैट्स इट. नाउ अपीडा 24.77 billion in 2021 they have exported. अराउंड 25 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है अपीडा ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में. दिस हैज मेड इंडिया टू 8th रैंक इन 2021. ठीक है, बस याद यही रखना है कि 37 ईयर्स पूरे हो गए अपीडा को. अपीडा मीन्स एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट. इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ठीक है, एक्सपोर्ट, कॉमर्स, ये सबसे रिलेटेड सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है. सो अपीडा कम्स अंडर Ministry of Commerce, established in 1986. It has done an export of 24.77, around $25 billion in financial year 2022. ठीक है, what it does is capacity building program and trade meets all over the country to encourage exports and facilitate doubling of farmers' income. So यही काम है अपीडा का. And for this year, the stage is set for $30 billion export. अभी 25 तक पहुंचे थे last year. For this financial year, the stage is the target is $30 billion, and we will achieve it. Okay, we are on the way to achieve it. First one. Now, International Solar Alliance is important. Rest ये मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी. This is not important. Just remember, आईसीए का हेडक्वार्टर गुड़गांव में 2017 से काम कर रहा है. 114 members and signatory countries are there. Remember this. Okay, and it is to unlock $1 trillion by 2030. The countries between Tropic of Capricorn and Cancer are the members of this International Solar Alliance. क्यों है member? Because mostly solar installation falls between Tropic of Cancer 23.5 degree north to 23.5 degree south, that is Tropic of Capricorn. बस इतना याद रखना है इसके बारे में भी फिलहाल. Operation Dost. Now, Operation Dost is a operation for relief operation that India did for the people affected from that earthquake in Turkey and Syria. तो यही है Operation Dost. ठीक है, Turkey and Syria, 3 teams of NDRF was sent to Turkey and Syria. That is called Operation Dost. That's it. Vibrant Village Program we know under MHA for infra development around the eastern and northeastern border of the country. Okay. So Union Cabinet chaired by Honorable Prime Minister has approved centrally sponsored scheme Vibrant Village Program for 2023 to 2026. Allocation कितना? 4800 crore, out of which 2500 crore will be for road development only. Okay, it will be there for 4 states and 1 UT. नाम पता ही होगा, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड देन अरुणाचल प्रदेश. ये सारे स्टेट्स एंड यूटीज जो हैं, दे कनेक्ट their borders with China. So okay, first phase में 663 villages. Now, the scheme aids and identify develop the economic drivers based on hub and spoke model. Means there will be a hub, a district hub will be there, और उसके around जो village होंगे, that will be developed under hub and spoke model. What is the main outcome of this? All weather connectivity, road, drinking water, and most important, jobs, employment opportunities to the people living there, so that the demography does not change in the border areas.
अगर डेमोग्राफी कम हो जाएगी, so it will be easier for the who to come and claim the lands. इसीलिए making mind maps is tough. What you can do is take a paper, Manish, and बस 5 या 6 important points लिख लो that are distinct to that scheme. It will be done. एक तो उसका मिनिस्ट्री लिख लो, because मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एग्जाम्स. एक आउटले लिख लो, और कुछ इंपॉर्टेंट लगे जैसे सीएसएस है या सेंट्रल सेक्टर है वो लिख लो. दैट्स ऑल. और कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बस दैट्स ऑल. बाकी अगर कोई रिसेंट स्कीम्स है तो उसको तो पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए सो दैट द डेमोग्राफी डज नॉट चेंज. ओके, डेमोग्राफी बचानी है तो क्या करना होगा? इंफ्रा डेवलप करना होगा. फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट यू वांट द पीपल टू लिव इन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग रहें, इसके लिए क्या जरूरी है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल. हाउ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर टू मेक अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, और improve the tourism in those areas of border villages. Okay. Now the Jal Jan Abhiyan. अब ये it was started from राजस्थान. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और ब्रह्म कुमारी का ये इम्प्लीमेंट किया हुआ था. इट विल बी फॉर 10, it is a organized 10,000 program and at least 10 crore individual will be contacted for this, for protecting 5,000 aquatic bodies. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज नहीं है बस क्योंकि जल शक्ति और ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ रहे हैं. इट्स लाइक अ एनजीओ टाइप ऑफ थिंग. ठीक है कि मिनिस्ट्री का सपोर्ट है, ब्रह्म कुमारी इज ऑब्वियसली एन एनजीओ. तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है. दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर. ओके. नाउ सागर परिक्रमा फेज 3 फ्रॉम हजीरा पोर्ट इन गुजरात एंड इट विल गो अप टू मुंबई महाराष्ट्र. तो ये 3 हो गए, चौथा भी हो चुका है. द फोर्थ वन इज इन कर्नाटका. द फोर्थ सागर परिक्रमा फेज विल बी इन कर्नाटका. द फर्स्ट 2 was in Gujarat, then from Gujarat to Mumbai or Maharashtra, and then from here to Karnataka they will. Now international days you can remember if you can. Okay, International Mother Tongue Day, that is 21st of February. Okay, declared by UNESCO and initiated by Bangladesh. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. बस याद रखना है कि 21 तारीख को 21st of February is International Mother Language Day by UN. UN General Assembly has recognized it. Social Justice Day February 20. If you can remember it. Now defense capital. अब बजट आउटले कितना है डिफेंस का? जस्ट रिमेंबर दैट अराउंड 6 लाख करोड़ इज द बजट आउटले. अराउंड 6 लाख करोड़ इज द बजट आउटले फॉर दिस डिफेंस. उसमें से भी 1.6 ओनली 1.63 लाख इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. मोस्टली बजट आउटले जो होता है डिफेंस के लिए, दैट इज यूज्ड फॉर मोस्टली फॉर पेइंग द सैलरीज एंड द पेंशन. सबसे ज्यादा पैसा वहीं लगता है डिफेंस में. एंड ओनली 1.63 लाख फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन इंफ्रा डेवलपमेंट मीन्स गन्स, वेपन्स, वो सब भी. एंड मोस्टली अप टू 75% ऑफ द things are indigenous in India, whatever is procured. अब ये 90% तक जाने वाला है from this year. Okay, now simple things. Dumti village in Ladakh. अब ये important क्यों है? Because water has reached for the first time in Dumti village, piped tap water at -30 degrees centigrade. Okay, Dumti village in Ladakh. Now, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 held in Mumbai, एक भारत श्रेष्ठ भारत. Now, Amrit Pex is a national philatelic exhibition. 5-day Mahakumbh of stamp in New Delhi, not important. Okay, this is important. Nirman Se Shakti. In ESIC on December launched Nirman Se Shakti to modernize its infrastructure. Remember it, Nirman Se Shakti for ESIC. IPF is important. The pillar 4 to 6, 2 to 4 of IPF, because trade pillar 1 को इंडिया सपोर्ट नहीं करता है. It was held in New Delhi. इसका एक और मीटिंग अभी रिसेंटली चल रहा है. When it will be concluded, we will see in Bali. India is also there as a member.
in Bali. IPEF की अगली मीटिंग is going on. Now उड़ान पूरे देश का आम नागरिक, तो a total number of 73 unserved airports, including 9 heliports, have been operationalized under Udan scheme that was launched in 2016. ठीक है, कैप करता है कुछ सीट्स फॉर द रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल फ्लायर्स. ओके, G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग इन खजुराहो, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग इन खजुराहो. ओके. Now Kavach, we all know cyber security, cyber crime challenge. There is a Kavach also that relates to the Indian Railways. ठीक है, वो इंडियन रेलवे का इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन सिस्टम है, उसका नाम भी कवच है, तो रिमेंबर इट. ओके. नाउ फर्स्ट पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान रीजनल वर्कशॉप वेयर इन गोवा. जस्ट रिमेंबर इट, फर्स्ट मास्टर प्लान इन गोवा. फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग इन बेंगलुरु, जो कंक्लूड हुई विदाउट एनी स्टेटमेंट. ठीक है, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया. यूपीआई पे नाउ लिंकेज, वी हैव रेड अबाउट इट इन डिटेल इन द मॉर्निंग क्लास, गो थ्रू इट. वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आरबीआई में एज अ सर्कुलर आया था, रिलीज हुआ था. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ली लूंग ऑफ सिंगापुर हैज लॉन्च्ड payment system between UPI of India and PayNow of Singapore. Singapore is the first country which was first cross-border person-to-person payment facility launch हुई है. Now a question is, how much money per day can be transferred through UPI? कितना पैसा एक बार में ट्रांसफर कर सकती है जनता through this method, UPI PayNow linkage? How much money per day can be transferred by UPI PayNow linkage? Please comment down. Correct, Aniket. Okay, correct. One correct answer. 60,000 rupees can be transferred. ठीक है. 4 banks from India for both inward and outward remittance, and 2 for only inward. Axis Bank and that DBS, new DBS India. Okay, और इसमें कुछ important था देख लेना. But 60,000 rupees is for UPI PayNow linkage. Okay, now Suposhit Ma. So Om Birla, our speaker, inaugurated Suposhit Ma Abhiyan in Ramganj Mandi area of Kota for every mother and child healthy. Okay. Again, the first G20 of culture in Khajuraho, we have seen it. 18th World Security Congress for Railways and Railway Protection Force is going to be organized by International Union of Railways and Railway Protection Force come together for 18th World Security Congress. अब आरपीएफ कम टुगेदर हुआ है तो ये कांग्रेस इंडिया में ही हो रही है. रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर द फ्यूचर. अभी नो व्हाई विल यू रीड द सेम थिंग ट्वाइस? अगर ईएस देखो, लेट मी बी वेरी क्लियर. देखो ये तो हो गया. सो दिस इज कंप्लीटेड पीआईबी रिवीजन पार्ट 2. डोंट गो इनटू डिटेल जिसके बारे में हमने बात आज नहीं की है, जैसे हेल्थ और डिफेंस. इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. वॉट एवर वी हैव डिस्कस गो इनटू डिटेल. एंड ऑल्सो द स्कीम्स दैट आर मेंशन. अब जैसे जल शक्ति मिनिस्ट्री की स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, और जल संरक्षण इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन इंडिया करेंटली. तो उसकी स्कीम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना, ज़्यादा नहीं. सो क्लास इज ओवर फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द लेक्चर. अगर आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड हुआ है तो डू लाइक एंड शेयर. मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम. ओके, नाउ अभी एनी केस. सो इन ESI आई हैव अ सेपरेट कॉलम फॉर द सर्कुलर पार्ट. उसमें आरबीआई और सेबी या इफ्सका के इम्पोर्ट, आरबीआई के तो खैर सारे ही होते हैं, एंड सेबी एंड इफ्सका द इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स आई इंक्लूड. पहले सेबी आई यूज्ड टू इंक्लूड अ लॉट फ्रॉम सेबी, बट आई हैव स्टॉप्ड इंक्लूडिंग मच फ्रॉम सेबी बिकॉज सेबी का एग्जाम हो नहीं रहा है अभी. There is nothing that I can do that SEBI exam is not happening. December तक तो ये था ना कि SEBI का exam will happen in, let's say, February. So I used to include a lot from SEBI, but I have stopped including a lot of circulars from SEBI, only important ones. And RBI के circular भी ESI के notes में होते हैं. दो सर्कुलर, वही सर्कुलर का जो कॉलम है, I separate it and make a different PDF.
because people demand that we will only read circulars. We want to make a printout of circular, so I make a different document. Circular का एक और document, monthly document I release. That's all it is. Not every SEBI circular is important, but SEBI is a part of your core finance syllabus. तो इसीलिए जो कुछ कुछ चीजें SEBI चेंज करता है important, that can be important. सारे important नहीं होते SEBI में. जैसे B30 वाला है, that can be important as a 1 marker in phase 1. phase 2 में तो जरूरी नहीं पड़ेगा उसका, लेकिन phase 1 में उसकी जरूरत पड़ सकती है. So not everything is important. Okay. Content आप बना. The content is same that I discussed with you on the board. वही है, same content है. इसमें बनाना अभी. Okay. Thank you everyone. Thank you for joining. We will meet in the next class. Bye bye.